Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude classes Jaipur, and today I am with Mr. Mohit Panwar, and he is research scholar at IIT Kanpur. And today we are going to discuss some basic problems of students who are preparing for IIT JAM and NET JRF, and we'll also discuss some questions regarding physics. And in this video, we will completely introduce you some interesting fact about physics. Okay, so first off, my question is that what are the benefits of Indian Institute of Technology? Because we have already state universities and local college. तो जो पहला जो क्वेश्चन आता है अपने जो लोकल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये आता है कि हम आईआईटी जेम की प्रिपरेशन करें और फिर आईआईटी में जाके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या एडवांटेज हमें जो है एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं. So basically, in the IITs there is a good infrastructure. Basically, first and the quality teacher, and there is a lots of and job opportunities and lots of in IIT in on various IITs. And another which is very best, I know about the research about you yourself can introduce what is the new area of research, in which area research is going on, up to the what extent, and so you explore yourself in more in detail. So these are the basically facts which are not available in IITs, and we have a good exposure, and you if you have good contacts, you can project with some collaborate with various other department also, which are help in one research area, and you can go abroad also with the help of the recommendation of or a corresponding professor under which you are working basically. So I think these are the benefits other than state universities. Okay, so according to Mohit, there are more opportunities at Indian Institute of Technology because there you will get a quality education. First First of of thing, you will get a quality education, and another thing is that due to recommendation of the teachers, you can get your postdoc or PhD from abroad. Okay, abroad so abroad also, and in I think in IIT teacher and student ratio 10 raised to 1, and every 10 students there is a teacher, and all the classes of every subject will run regularly, and you will learn all the subject with very fundamental way, in a fundamental way that help a lot, I think, in your research area or whatever in the field you want to go. सो लिटरली जो मैनेजमेंट होता है टीज का वो काफ़ी डिसिप्लिन होता है, जैसा कि मोहित सर ने भी बताया कि जो रेशियो होता है स्टूडेंट और टीचर का वहाँ पे वो 10:1 है, मतलब हर एक 10 स्टूडेंट के ऊपर वहाँ पे एक टीचर अवेलेबल है, जो कि लोकल कॉलेजेस में या लोकल जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वहाँ हमेशा मारा मारी रहती है टीचर्स की. तो टीचर्स ही नहीं है तो बाकी सब चीज़ें तो जो है सेकेंडरी हो जाती है. अगर टीचर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो अवेलेबल नहीं है तो आईटी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं इनफ क्वांटिटी के अंदर हैं जो आपको वहाँ पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं. And there is a lots of students there which are working in various fields, so whatever your problem, so you can direct talk to them. they they without any fearlessly you will get help from there directly, or you can approach direct to the teacher also. So in the in IITs the guys are very well helpful, so you will get direct help without in whatever the field, in computational problem, or you are problem facing in understanding the subject also, and there are lots of other things then you can get directly from the IIT other than state universities. सो बेसिकली एक और एडवांटेज क्या हुआ कि जो आईआईटीज हैं वो क्या सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं अपने पूरी कंट्री से, इवन आउट ऑफ कंट्री भी जो है इंटेलिजेंस वहाँ आ रहा है. तो आपको क्या प्रॉफिट रहेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसे आईआईटी में एंट्री करते हैं और अपने जो स्टेट्स हैं जैसे अपने नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स आ जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी आती है. लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी जो पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपको वो हमेशा हेल्प के लिए रेडी होते हैं. दूसरी चीज़, टीचर्स भी हमेशा अवेलेबल होंगे. ऐसा नहीं है कि आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप उनको मेल कर सकते हो और वो डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करते हैं. तो ये सबसे अच्छी चीज़ है. तो हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कोई डिसएडवांटेज भी होगा, लेकिन क्या कोई डिसएडवांटेज भी है आईआईटी जाने का? I think it depends upon the situation there, because there is lots of games and there, so suppose someone get involved in that, there is a lots of club also, so these are basically entertainment purpose. If you want to explore that idea also, but take it as an advantage, so you can develop your skill in communication also. IIT Kanpur also provide a good sports facility,
so you can play whatever be games you want with. So there is also lots of possibility you can explore in that idea also, not about just academic तो are the best I assume, but So other things are also. तो वहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हैं और जो एंटरटेनमेंट के लिए जो क्लब्स वगैरह हैं या फिर शायद ओपन थिएटर भी होगा आई हाँ थिंक, या तो ये सब चीज़ें वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो है वहाँ पे होती हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आईआईटीज़ के अंदर बच्चे जो हैं प्रेशर में आ जाते हैं। अब ये डिसएडवांटेज कब होगा, जब आप इसका गलत यूज़ करने लगोगे, आप स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो और आप अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी बना दे रहे हो। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मोहित सर देयर इज़ नो डिसएडवांटेज ऑफ आईआईटी। ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो है कि इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के बाद भी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि किस फील्ड में जो है रिसर्च चल रही है या किस फील्ड में वो जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीसर नेट की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, आप जेआरएफ के बाद क्या करने वाले हो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द रिसर्च फील्ड। सो what they are going to do after JRF। तो यहाँ पे जो है अपन डिस्कस करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या रिसर्च फील्ड हैं जिन पे मेरी रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो मोहित सर है वो खुद रेडियो एस्ट्रोनॉमी से है आई थिंक। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, so basically in IIT in the I think MSc second semester we have a course if PHY 400 something like that. So in that course basically every professor come and talk about their research and Okay. what are the applications and what up to what limit the research has been done and what are the possibilities we need to explore. So you will get from every professor what he is doing and what come to next. So that's why you know every field, and according to that you know yourself what are my experience and what my capabilities, what can I do in field, and in field which I very interested very most, so I can directly contact to that professor in the for the project work. In we have MSc in project work in MSc courses in the regularly third semester, fourth semester, second semester. If you want to change you can change in any semester, that doesn't matter, professor does not bother you have changing, or such things are not available in IIT Kanpur. You can change your project anytime, in even after the PhD also. Suppose in the first year of PhD, if you find that I am not anymore interested in this field, so I want to change after my PhD 1 year completion, so you can that also change. But obviously this waste your time because you have already waste 1 month. So if for that you have to choose your project report in MSc regularly, so you can change report and make sure that you have clearly made mind to work in these fields, and then you can continue under whatever whoever the professor under you want. so one of the advantage of IIT is that in second semester all the professors available in the institute comes and explain their research of field, मतलब किस फील्ड के अंदर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाली, और क्या जो है इसके कंक्लूजन्स होने वाले हैं, फिर आगे क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आप सब प्रोफेसर क्योंकि आपको आके ये सब चीज़ें समझाते हैं, तो अब आपको वहाँ पे क्या मिलता है, नॉलेज मिल चुकी है कि हाँ इस फील्ड में ये हो रहा है और आगे ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसके ये एप्लीकेशन होने वाले हैं। अगला प्रोफेसर अपनी बात बताता है, तो क्योंकि वहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स हैं तो मतलब आपको लॉट्स ऑफ नॉलेज मिलने वाली है कि किस फील्ड में क्या रिसर्च जो है चल रही है, जबकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मोस्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया कि आपको बहुत सारे फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब क्योंकि आपके पास देखो ऑप्शंस हो गए, क्या हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो आप उनमें से चूज कर सकते हो कि या दिस वन इज़ बेटर फॉर मी। ठीक है, आप उस प्रोफेसर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने एमएससी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ क्या है कि प्रोफेसर्स ऑफेंड नहीं होते हैं कि अगर आपको लग रहा है बीच में कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये जो है मेरा जो इंटरेस्ट है उससे बाहर चला गया है, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। जो प्रोफेसर है वहाँ पे वो इस चीज़ से ऑफेंड होके आपकी ग्रेडिंग्स पे या इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि अगर आप नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऐसा देखते हो तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि वो मतलब ऐसा आत्मसम्मान, ईगो, आप इसको कह सकते हो ईगो, ईगोस्टिक टीचर ज़्यादा मिलेंगे आपको अगर लोकल कॉलेजेस की बात करोगे। मैं नहीं कह रहा सभी टीचर्स ऐसे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है। लेकिन क्योंकि आईआईटीज़ क्या है, मैंने पहले ही कहा है कि दिस इज सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव ईगो, एटलीस्ट आई थिंक सो। ओके, तो आपको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, आपको ऑप्शंस मिल गए हैं, आप वहाँ चूज़ कर सकते हो। और फिर भी जो कुछ रिसर्च फील्ड हैं जिनके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं, तो आपकी जो अवेयरनेस में है वो कितने फील्ड्स हैं जिन पर अभी रिसर्च चल रहा है। Currently in IIT is basically experimental
research is going on very fast and in widely basically in plasma physics and low temperature physics. This all basically come under the basically experimental setup and superconductivity on basically and once more in cosmology, radio astronomy, and various theoretical as well as experimental setup. If you are good at experiments, so I think you should try the experimental first. And if you are want to be a good theorist, then you should go for the theoretical work also. So there is a lots of professor are almost equal in quantity. It means half professor working on the experimental and other half working on the theoretical as well as. So you can choose whatever you like. Suppose you like in theoretical, so you can choose according to your interest. And in theory, lots of research area currently working just like in a high energy basically particle physics and cosmology and GR which I have already talked about it. And once and lots of thing also going on in the IITs other than this. Suppose in the experimental we have soft matter and which directly link to the industrial part. So you can get direct opportunity to the after your completion of your degree, you can directly get benefit from the, you can develop new something that is very important for industrial purpose also. So they have direct link to the industries. So you will get more, I think, if you have good model and good skill, so you will get paid well then. ओके सो बिकॉज रिसर्च जो है वो मोस्टली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे जो चल रही है उसका जो लिंक होता है डायरेक्ट इंडस्ट्री एरिया से होता है। तो अगर आपकी जो डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट होते हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि पैसा, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब पैसा बहुत है, अगर आप साइंस में आते हैं तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर आप पीएचडी के अंदर नहीं जा रहे हो तो जो एमएससी के बाद ऑप्शंस जो होते हैं वो आप पीएसयूज ज्वाइन कर सकते हो गेट एग्ज़ाम के थ्रू, और इनका सेपरेट एग्ज़ाम भी लगता है, जैसे पीएआर से अपना सेपरेट एग्ज़ाम लगता है। तो पीएसयू जैसे ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी, बीआरसी, इसरो, ठीक है, डीआरडीओ। तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक बी ग्रेड ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो मास्टर ग्रेजुएट्स के लिए होती है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन अपना होता है, अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है और अगर आपका जो है नेट क्वालिफाइड हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च फील्ड में जाते हो या आप पीएसयू ज्वाइन कर लेते हो मास्टर के बाद, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। सो दिस इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो now we are going to discuss some interesting phenomena of physics, like I am interested in Heisenberg's uncertainty principle. What is the physical interpretation of this law? So basically, Heisenberg principle says that you cannot determine simultaneously position and velocity of any particle at the same time. You can determine position precisely at that position, but at that time you don't know what is the velocity of the particle. And once you know velocity very precisely, and there is no fundamental limit beyond which you cannot determine the position of that particle. So what is the physical meaning of that principle? The physical meaning basically lie in the heart of the basically quantum mechanics, which originate quantum mechanics. And once more, this basically sets the limit basically beyond which you cannot go. It is not some ability to instrument which prevent you. It is the basically nature who prevent you, cannot reveal the secret, the certain limit beyond that limit. So it is the limit fixed by the nature, which is known as related to the Heisenberg uncertainty principle basically. Okay, so basically we can say that this limit is decided by nature. Yeah, so nature. we can't do anything to fix this problem. Means Yeah, this is not going to be solved. this is not This this is not uncertainty remains forever. this is forever as, and this is not introduced by the any instrument, whatever the fine instrument you can design, but you cannot go beyond that limit, because this is limit fixed by the nature. तो देखो जो अपना जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई हाफ। तो ये देखो सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं होता है, किन्हीं भी जो फिजिकल ऑपरेटर्स जो हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए जो लो है लगता है। जैसे कि आप साइमल्टेनियसली एनर्जी और टाइम को जो है क्या नहीं कर सकते, दो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज। तो जितनी भी जो दो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ हैं उन सभी के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है।
तो यहाँ पे आता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई टू। तो ये अनसर्टेनिटी है, हम कह रहे हैं कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि हम मेजर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वेयर इज द प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन एक्सपेरिमेंट्स और इज देयर एनी प्रॉब्लम इन एपरेटस। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप कितना ही एपरेटस को क्या कर लो, रिफाइन कर लो, बेहतर बना लो, आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमेशा आने वाली है। मतलब अपनी जो एक्सपेरिमेंट है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी आप चाहे कितना ही जो है और ज़्यादा रिफाइन बेस्ट कर लो बना लो, इन्फिनिटी जो है प्रिसाइशन दे लो, एंड लेकिन अपन क्या नहीं कर सकते, इस अनसर्टेनिटी से बच नहीं सकते हैं। तो अब ये किसके द्वारा डिसाइडेड है, नेचर नेचर के के द्वारा द्वारा डिसाइडेड। why this is so, basically in quantum mechanics we operate the things on state and ओके get the respective result. When you operate the result, so you system throw in the particular state. ओके So suppose you are observing position first, so you have throw the system in the position space. ओके So at that position space, this is state position, you can, this is not the state of momentum मोमेंटम operator या anymore, so you cannot get the information of momentum at that time. Once you have applied the momentum first, then this is state throw in the momentum state, this is not the सिस्टम इज eigen इन state, नाउ मोमेंटम this स्टेट। is not the eigen state of position now. So so that these two quantity basically uh, don't commute each other. It means when you measure the first observable, so system will in other state will go, that is not the state of that first observable. सो So that's why बेसिकली that these are the commutation relation. स्टेट चेंज हो जाता है, State जैसे ही आपने जो yeah. है पोजीशन ऑपरेटर उस पर लगाया तो जो उसका था तो स्टेट चेंज हो गई है। अब अगर आप मोमेंटम ऑपरेटर लगाओगे, अब क्योंकि उसकी स्टेट जो चेंज हो चुकी है, तो जो मोमेंटम आएगा वो चेंज हुई वाली स्टेट का आएगा, पिछले वाली स्टेट का नहीं So आएगा, which is जबकि not the पोजीशन, eigen state of momentum. So जबकि जो अपनी पोजीशन थी वो पिछले वाली स्टेट की थी। मीन्स वी आर गेटिंग पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ओके, which are not the eigen state of both common. बहुत कॉमन। तो अगर मतलब ऐसा कोई ऑपरेटर्स है जिनकी आइगन स्टेट कॉमन है तो वी कैन मेजर देम साइमल्टेनियसली। Yeah, yeah, lots of quantity commute each other. What is the meaning of the commutation in quantum mechanics? That is the if two operator commute each other, it means you can measure either first or second. The system in the same state and will give the result corresponding to ओके, that तो अपना operators. क्वांटम मैकेनिक्स में एक और जो है वर्ड आता है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेटर क्या हो गया कि अगर कोई क्वांटिटी कम्यूट कर रही है, इसका मतलब दे कैन हैव साइमल्टेनियस सेम आइगन स्टेट, Same eigen same state. eigen state, so You we can can measure measure them simultaneously with infinity accuracy, accuracy के साथ जो है अपन by उनको। either applying the first operator first and then second operator, or you can interchange both. You will get the same state and corresponding output also. तो जैसे अपन ने जो है काफ़ी अवेयर हैं अपन कि किस तरीके से जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है डेवलप हुई और किस तरीके से जो है क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती जा रही थी एक पर्टिकुलर स्केल के बाद, जैसे अपन जो है क्वांटम स्केल पे जाते हैं। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे कोई एक ऐसा स्केल आ जाए जहाँ पे क्वांटम थ्योरी भी जो है फेल होने लगेगी, या फिर हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत हो? हाँ देखो, it depend upon the what is the interest of your length scale, in which length scale you are interested. Obviously you cannot apply Newton's law at the microscopic level, which is Exactly. Bohr. So it means what who preventing you to describe such minima. So basically the fundamental property associated with that object is changed with time. So it was, suppose you could describe the particle in classical physics very well using the Newton's law, but that because particle have wave character. So in the when you go down beyond the limits, the particle have peculiar behavior at that scale. So when you more down, so we don't know the particle how it's going to behave and what is the equation in that behavior going to describe that nature. So in more in the same when we go the higher scale, so when we describe the Newton's law and beyond the theory of relativity, but when we go beyond the cosmological scale, when we still don't know the GTR is applicable to that scale or not, there's the open question to everybody. ओके, तो कॉस्मोलॉजी के अंदर भी जो एक स्केल है जिसके बाद जो है जीटीआर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, certainty. जबकि जीटीआर इज बिगेस्ट थ्योरी इन हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। But तो at the cosmological length scale, which is almost about 1 megaparsec distance, in the but GTR applicable within that range, some planetary motion well described, and some within the galaxy you can say GTR is very perfectly fine. But beyond the you are talking about the two galaxies length scale, then the maybe possibility that GTR may fail. But still there is an open question. But we still use the concept of the GTR at that scale because they give approximate the good results.
So, and we have no reason to believe that this is not going to fail. But there remains a possibility then beyond the cosmology scale, maybe the theory fail. Okay, so here is one more question I personally have कि अपन एक स्केल डिसाइड करते हैं लेंथ का स्केल कि अगर अपन एंगस्ट्रॉम के 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड जाने लगते हैं तो क्लासिकल जो थ्योरी है वहाँ पे जो है वैलिड नहीं रहती है और अपने को क्वांटम थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं. तो क्या एनर्जी का भी कोई स्केल ऐसा जो क्लासिकल और क्वांटम को सेपरेट करता है कि इतनी एनर्जी के बाद अपन जो है क्लासिकल अप्लाई नहीं कर सकते हैं? Ultimately, this is related to the energy. What is the energy? You ultimately end up with the wavelength or a certain length scale. So finally, you are end up with the same Yeah, length. means energy is related to wavelength, and wavelength is nothing but a length scale. So yeah, there is a limit beyond that energy we cannot apply classical rules, and this was very simple. I'm literally impressed with this answer. So the next question is that how Hollywood shows the life of NASA. काफ़ी एडवेंचरस जो है वो लोग दिखाते हैं. तो क्योंकि ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी से जो है काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ एडवेंचरस लगता है कि रिसर्च में कि हाँ अपन कुछ क्या कर रहे हैं, जैसे जैसा मतलब हॉलीवुड फिल्में जो है शो करती हैं? This is just a fiction also. Okay. I must say, because every physical reality there is a mathematical descriptions behind it. Suppose at that scale we have no visualization directly, so we everything described in terms of the mathematics. If you are a good at imagination, so you can and every phenomena all written in terms of the mathematics, so that you have to understand what's going on and what is the beauty of the mathematical equations at that time. Suppose you rainbow, the visualizing very beautiful, Yeah. but when you're talking about in terms of the interference of light, you are end up with equation and how the intensity variation. So at that time things become complex. That becomes complex, and that is the only way you can understand. Suppose you have no eyes but you have know the mathematics, so you know there is an Indradhanush in rainbows in terms of the mathematics, but not in visualizing. The same thing happen for the cosmological length scale also. We have only mathematics, and mathematics tell you everything, and alone mathematics cannot tell you everything. There is a philosophy or physics behind it, some logics, basically the rules of nature, which help you that visualization what's going on. Suppose in the galaxy what's going on, there is in a black hole or not, what's the light emitted by the what is the lights emitted by the galaxy, and how the galaxy is moving. We cannot see them, but we can see them through the mathematics. So if you are thinking that if you join PhD in any field in astronomy and you will enjoy or feel like adventurous, then you are wrong. You have to find the beauty of physics. There is nothing like that that you will join and there will be some beautiful scenario. You have to find the beauty. Okay, तो जैसा जैसा सर ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि you can find the beauty through the only visible reason, just like optical telescope. We give a direct image of the galaxy because their sensor are very sensitive to the visible light, so they basically they have detectors, so which basically interact with the light and give you the corresponding phenomena, so you will get beautiful picture of the galaxy. But you know, at the galaxy emit in every possible wavelength, just like the X-ray astronomy, which study the galaxy only the X-ray part, and we are the radio astronomer, which basically study the galaxy in terms of the radio wavelength. And these all then radio wavelength in the radio regime, the galaxy look like different, and the more phenomena going on in the galaxy, so we discovered through this radio wavelength regime. And gamma ray astronomy also, they study only the gamma ray part of the how the galaxy emit in the gamma ray regime. And this all the complete this together, gamma, radio, infrared structure, they all complete descriptions of the galaxy, then you will get. Okay, so here is one more question that is very common question that can we formulate quantum mechanics without classical mechanics? और अभी जितने भी जो फॉर्मुलेशन है मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन जो हाइजेनबर्ग ने दिया, या फिर आप वेव मैकेनिक्स की बात कर लो श्रोडिंगर ने जो दिया, या फिर आप जो है ब्राकेट जो स्टेट्स को डिनोट करते हैं, डिराक ने जो बताया अपने को ऑपरेटर से किस तरीके से डील करते हैं, उनकी बात कर लो. तो क्या ये जो फॉर्मुलेशन है ये क्या विदाउट क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन डिराइव? We can derive, but it is very hard because we borrow the things from the classical mechanics directly, because we have developed classical mechanics we earlier. have very borrowed from the classical mechanics.
Suppose just like momentum operator, we have momentum, just introduce a momentum as an operator. Okay. And you know the angular momentum r cross p. So in quantum mechanics we for the momentum angular momentum operator we just replace r by r operator and cross p by p operator. So these are the things we borrow directly from the classical mechanics. If you don't have classical mechanics, so it is going to hard. It is not impossible, because ultimately you have to determine what's going on in the system. It is becomes very complex, and it's take lots of time to develop. So basically it may become very complex if we do not have classical mechanics, but अभी तक जितने भी फॉर्मुलेशन है उनमें सारा क्या है बोरो किया गया है क्लासिकल मैकेनिक्स से ही चीज़ें क्या है उठाकर क्वांटम मैकेनिक्स में उनको जनरलाइज किया गया है। जनरलाइज किया गया है। तो जितने भी अभी फॉर्मुलेशन है वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स से ही फॉर्मुलेटेड किए गए हैं। लेकिन आपको पता है कि कभी भी चीज़ें क्या है रुकती नहीं है किसी के भरोसे, कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होता तो क्या क्वांटम ही नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कि जो हो सकता है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन Heisenberg also described the quantum mechanics in terms of the matrix formulation, completely different from the Heisenberg. So but you will get the same physical reality. So there is a physical nature of the system does not change. It merely in how the tools basically, these are the tools how you probe the system. So suppose you have very complex tools, so you will get involved in lots of mathematics, and so you will end up with the simple results. And if you are very intuitive to which tools I have to use to discover the new things in the system, so it is depend on you. It depend basically your intelligence, or what is the capability available at that time, so that you can probe that scope directly. सो बेसिकली जो क्वांटम है वो जो है जैसे कि सर ने बताया कि फॉर्मुलेशन जो है हो सकता था, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कि भाई अगर सपोज दैट वी डू नॉट हैव क्लासिकल मैकेनिक्स तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से जो बताया जाता है, जैसे हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों के जो फॉर्मुलेशन है कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट है, बट बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। और दोनों अपनी अपनी जगह कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वन इज मोर इंट्यूटिव एंड द अनदर इज लेस, and in another example the first one is less intuitive and the second one is more easy and more intuitive। तो ये डिपेंड कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स पे, एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है, और डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। इफ यू आर वर्किंग इन टाइम वेरिएबल फील्ड्स और टाइम dependent forces, so I think it is better to use Heisenberg, because in Schrodinger it is hard to solve a partial differential equation which involve lots of time, and so in the matrix formulation you can deal it very easily and it is calculatable, it is manageable basically, not hard. But otherwise you are going to mess up with the lots of mathematical complexity rather than your physical reality. ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो जब अपन बच्चे होते हैं ना, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे को लगता था कि मुझे जो है मैं इंजीनियर बनूंगा बड़ा होकर। क्यों ऐसा लगता था कि इंजीनियर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। फिर धीरे धीरे इंजीनियर्स पे जोक बनने लगे, और फिर जो है हमारे एक नेबर थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। फिर मुझे लगा यार अपने को सीए बनना चाहिए। लेकिन फिर स्कूल के अंदर जो है फिजिक्स ले ली। फिर फिजिक्स में थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फिर ग्रेजुएशन में थोड़ा इंटरेस्ट बना और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है फिजिक्स कंटिन्यू किया। तो विच थिंग अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स द फिजिक्स, मतलब क्या था ऐसा कि जिसने आपको फिजिक्स के लिए जो है अट्रैक्ट कर लिया, या फिर आपको कैसे बताओगे कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स सो स्टूडेंट कैन चूज फिजिक्स। देखो, suppose what you want to, what is our goal basically to understand the descriptions of the universe. Basically physics just a methods to prove that, and only through the science we can understand how the nature behaves and how the things going on in the nature basically. So that is very beautiful to me, so that's why I choose physics. And how any physical phenomena, I really there is no mathematics behind it, and there is a certain rules of nature basically. Once we know all the rules of nature, then we can probe and use the, oh, so we can say engineering is just the application of the physics, nothing, just because we have find out the fundamental rules. And a scientist and sometime engineer find some fundamental rules, just like in the thermodynamics. I think engineers develop very well rather than, but these are just, they are the key features of the nature, how the nature operate, and what nature wants. It imposes rules upon it, and we can use the rules to enhance the our lifestyle also. So there's a medical field also, so there are lots of application regarding there. These are the application of the science, but rather than application, if you want to really probe what is the nature, so I think you must go for physics. Okay, so I didn't mean to offend the engineers, because engineers are also doing Sometimes great they work. design a very great design of the Okay, so तो कहने का मतलब था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि नेचर किस तरीके से काम कर रहा है, यूनिवर्स किस तरीके से काम कर रहा है, और ये जो इसकी जो ब्यूटी थी, इसको इस ब्यूटी ने अट्रैक्ट किया,
फिजिक्स के लिए। हाँ, तो अगर that's why. आपको भी जो है आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ यार ये यूनिवर्स जो है किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ये जो है बना होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में है, सो यू कैन गो फॉर फिजिक्स एंड Even फाइनली। small thing can have bizarre results, something how the electrons moving. So if you have the descriptions of Newton's law, but when you apply the Newton's law to the electrons, you will get surprisingly results. So how the nature changing from the length scale, so it is really, and how the dynamics going to describe the, there is a lots of phenomena which are still unknown. So I think some magical things happens in science. Yeah, if you are, you can imagine only through the mathematics or just using the nature laws. These are the basically laws of nature, how the nature operate, and what is the, there is a, how the nature operate and why this is. So this, I think this goes a philosophical question, but how the nature operate and what is the beauty you can get to only physics. Okay, Uh, and so finally, what will advise you to the students who are preparing for IIT exam or at JRF and are students of physics? So what will be your advice for them? So basically first the phenomena you have to understand. Suppose first you need to lots of reading. Basically suppose you want to explore the something, so find out how can I describe that phenomena in terms of that normal people can understand. So basically when you try to answer yourself such question, you will get more interested in the phenomena, how this is going on, how going to describe it, and what are the major concept basically behind this phenomena, who is going to give these results. So and lots of application along with application also of that phenomena, but lots of interesting thing also, just like superconductivity and or the other industrial application also. So you can, physics is best to know the nature. सो बेसिकली जो है आप जो है खुद से जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक पढ़ो, उनसे जो है Yeah. आपको खुद के क्वेश्चंस मिलेंगे और खुद के जब आप आंसर जो है फाइंड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो है ब्रेन आपका डेवलप होगा और आपको चीज़ें जो है काफ़ी ब्यूटीफुली जो है समझ में जो है आने लगे. लग जाएंगी। ये एक एडवाइस था। और एक और कि क्या मतलब जैसे रिसर्च फील्ड के अंदर हम R&D के अंदर हमेशा एक बात उठती है, जैसे अभी फिलहाल भी बात उठ रही है कि जो अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा जो है खर्च नहीं करती है एजुकेशन के ऊपर, या अपनी अक्सर लोग कहते हैं कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। तो ये कितना ख़राब है या कितनी इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, और अगर कुछ ठीक करना है हमें तो हम किस तरीके से जो है इसको फिक्स कर सकते हैं, स्पेशली नॉट टॉकिंग अबाउट IITs और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली इन द स्कूल लेवल, इन कॉलेज and graduation level, and the situation is very worse. Yeah, but it has our advantage also. Just like suppose you have just normal papers and enough time. I think university is 1 year system, so you have to exam one time. So you can explore that idea in such a way that you can study whatever you like, and also level of the exam also not so much hard that you cannot prepare other subject also. But in that period you can study whatever you like at most, and because in the level exam level also not very hard, so that you get involved all the three subjects, so you can use that time, to explore what you want to do. So that is the biggest opportunity that you should go for that, I think. And other also, this is the very basically advantage of the universities. If you want to explore something, you have enough time. You have enough time. Enough time. But in IITs you will not have enough time But to do this. no time, but along with you are learning all the subject also. Okay. There In you the will same. get more opportunities, more resources, but less time. Because your schedule So will be busy. busy, but Compared both to are the state same thing. universities, You have time, and in the universities you have time, but you do there not is have also enough but resources. because number of students more, so you, there is interaction between teacher Yeah, and exactly. because also reduces, so that is the possibility almost remain in the depend upon the population of And the students. what can be improvement in our education system? So basically first of all we have to, so first thing, so we have to come to the class. So I generally see that nobody come in the या universities. क्लासेस जो है बंक नहीं करनी है आपको, जो पहला जो एक सजेशन है ये। Because you enjoy your life, but you have to take, this is my responsibility that I have to take class, and If you are after that you enrolling can for go, any course, you have after to. that you can go whatever you like. Suppose you have 3 hours or 4 hours allotted for that region, for that particular time, so that use that time, and other time you can go whatever you like. So in the generally we IIT do whatever. Suppose we have to see a movie, so we can go in the night also, but in the classes
we regulate it because if you don't, because if you don't take classes, we don't understand the subject very well. Yeah. So it will obviously miserably fail in our project or whatever the problem assigned to. And how can I don't know if I don't attend the class? So I don't know about the subject. How can I solve it? So I cannot solve it. So I have to attend the classes all the regularly, because not because of some academic pressure or because you have come to the MSc till MSc, so because you have interest in that, you want to know, to explore the idea of explore the more about the nature. So that's why this thing. And if you are interested, then things become very easy. If you are just take it as a boring and burden, then you cannot do that. I think it is hard to do that. But if you are interested, then everything will be easy. And find out more for papers and easy books also available. So but you have to just search out them. There is lots of literature available in quantum mechanics and classical mechanics, and lots of things available online. All the papers on the general, you can look after that. You can look directly into the subject. And in IIT you can go directly to the professor, because I just already told you that ratio 1:2. So you can directly talk to the professor what's your problem in understanding something, or in computational problem you are not in all programming language also. You can direct talk to them. You get directly help. सो बेसिकली जो है प्रॉब्लम तो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रॉब्लम हम में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है. वी आर बंकिंग अवर क्लासेस. तो अपनी क्या है, अपनी क्या आदत होती है कि अपन दूसरे के अंदर कमियां थोप देते हैं. तो जितना सिस्टम के अंदर कमियां, उससे कहीं ज़्यादा कमियां हमारे अंदर होती है. ठीक है. जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एनुअल एग्जाम की जो पॉलिसी है, या जो वहाँ पे जो वर्कलोड होता है कम होता है, तो उसका एक एडवांटेज है क्या, कि आपको इनफ टाइम मिल रहा है. बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जो सिलेबस के अलावा जो है, आप अपने रिसर्च का जो भी है या जो आपका इंटरेस्टेड फील्ड है वो आप पढ़ सकते वो हो. बहुत ज़्यादा टाइम तो दे ये सकते हो. एडवांटेज है. और पेपर भी उनका यूनिवर्सिटी का लेवल का पेपर इतना नहीं होता है. आई थिंक And state बेसिकली easy level. So that is the reason why they have easy level of the examination, because everybody who want to study go for that. You have enough time to do that. So that's why they have always. So if you explore it is up to you what you want to do. You how to use your time basically. Does any effort should be done by government too to improve our education system? Yeah, basically first of all in the syllabus also. Syllabus is in such a way that we directly use an application and how to intuitive. Suppose you are introducing the idea which are not introduced at that time. So these things are not So जो सिलेबस जो डिसाइड किया जा रहा है उसमें काफ़ी ध्यान रखना हाँ चाहिए कि जो है इंट्यूटिव हो, और जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन हो उसके. डायरेक्टली एप्लीकेशन हो. एक पर्टिकुलर जो है मैनेजमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं. सो थैंक यू मिस्टर मोहित for coming here and for this healthy discussion. Thank you very much. Thank you very much.